Hello everyone, welcome to Siddhi's Commerce Cafe. Today I will teach you how to make journal entries as most of my friends are confused about how to make journal entries. It is very easy. Let's start with me and stay tuned for more. So we start with golden rules for making journal entries, and these rules are very simple and very necessary for making journal entries. Let's start. Rule first. Debit, it means debit side, and credit side. Rule 1. What comes in business? Will be debited. Rule 2. What goes out from business? You simply remember that thing. What comes in business will be debited and what goes out from business will be credited. After that, we will solve some example questions and then it's become more clear to you. Rule second, receiver. Who is receiving will be debited and the giver will be credited. Rule 3, all expenses and losses will be debited and all income, gains and profit will be credited. Let's start with solving some questions. Question 1. Mr. Tarun commenced business by deposit 4,000 in bank. So, तरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया है 4,000 बैंक में डिपॉजिट करके. सो हमारे बिजनेस में बैंक में अमाउंट बढ़ी है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड. व्हाट कम्स इन बिजनेस? बैंक में पैसा बढ़ा है. 2. कैपिटल. सो वाई वी क्रेडिट कैपिटल. हमने क्यों कैपिटल को क्रेडिट किया है? वाई? बिकॉज कैपिटल इज इनकम फॉर द बिजनेस और लाइबिलिटी ऑल्सो. एंड बैंक अकाउंट वाई? बिकॉज वॉट कम्स इन बिजनेस में क्या है? बैंक में पैसा है. That's why we debited the bank account. And this is the format. First, date or serial number. If date is given, so you can write and not so serial number 1. Then particulars, LF, ledger folio, debit, credit. And for narration, being business started and the amount is 4,000. So 4,000 is in debit and 4,000 is in credit. This is the format of writing a journal entry. Journal entry second, paid rent by check. Now rent is expenses and expenses will be debited. So rent account debited. 2. What goes out from business? चेक. इट मीन्स बैंक में से पैसा गया है हमारे पास से टू बैंक. बीइंग रेंट पेड. हाउ मच? 5,000 rupees. Entry number 3. Purchased furniture. Now what comes in business? Furniture comes in business. As you remember rule 1, what comes in business will be debited. That's why we will debit furniture account. Furniture account will be debited. 2. If we purchase furniture, so we will buy it from cash. If is it given that we purchase furniture for check, so we can credit bank account, and if it is not given, so we will credit cash. Being furniture purchased
amount 40,000. These entries are very very simple. You only have to remember these three rules, and these three rules will work in all entries. Entry 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटेड. नाउ हमने सामान खरीदा उधार पर सी से. सो फर्स्टली आपको ये रिमेंबर करना है कि रूल्स में क्या था. जो सी था हमने उससे सामान खरीदा, तो सी इज़ रिसीवर और सी इज़ गिवर. सी इज़ गिवर क्योंकि सी ने हमको सामान दिया, तो सी अकाउंट क्रेडिट होगा. सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए. तो हमने लिख दिया टू सीज अकाउंट. एंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड. हमने करा है परचेज, हमें नहीं पता हमने क्या परचेज करा है, तो वी कैन राइट स्टॉक और परचेज विच यू वॉन्ट, एंड दीज विल बी एक्सपेंसिस फॉर द बिजनेस. इफ वी राइट परचेज, so purchases are the expenses of the business, and if we write stock, so stock comes in business. That's why we will debit purchase or stock that you want. Both are correct. Of 9,000, and C is the giver, that's why we will debit, we will credit C's account. Being purchase from C. I think till now this is clear to you. Next question, question 5. Sold goods for cash. हमने सामान बेचा 25,000 का, 25,000. सो वॉट कम्स इन बिजनेस. कैश कम्स इन बिजनेस. आप रियल लाइफ से रिलेट करो. अगर आप कोई सामान बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, तो बिजनेस में क्या आया, कैश. इन रूल 1, वॉट कम्स इन बिजनेस, कैश कम्स इन बिजनेस. सो कैश अकाउंट डेबिटेड. 2, आपकी क्या हुई है, सेल्स, एंड सेल्स इज इनकम. सो 2 सेल्स अकाउंट 25,000. Being goods sold. Narration is very simple. Most of my friends are confused at how to make narration. Narration is nothing. You only start with being and write the simple and narration from the entry. For example, for this entry, I add being and then goods sold from the entry. It is very simple. You only have to practice these entries and you will succeed in doing this. Entry 5, पेमेंट ऑफ वेजेस. अब ये आप लोग सोचो, हमने वेजेस दिए हैं. वेजेस इज अवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वॉट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. अगर आप किसी को वेजेस दोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश, बिकॉज इट इज रिटन टू कैश अकाउंट. एंड वाई विल वी क्रेडिटेड कैश अकाउंट, बिकॉज वॉट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश. बी wages paid, and how much, 900. Entry 7, purchase scooter for business. So what comes in business, scooter account, scooter account debited. Now what goes out from business, cash और बैंक. चेक से गया तो बैंक, एंड कैश लिखा है या कुछ नहीं लिखा है तो कैश. यहाँ पे हमको दिखा हुआ है परचेज स्कूटर फॉर बिजनेस ₹40,000, मेड पेमेंट बाय चेक. इफ चेक इज रिटन, सो योर अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट. पैसा आपका बैंक से गया है टू बैंक अकाउंट. वॉट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बैंक, इट मीन्स चेक. बीइंग scooter purchased ₹40,000. And this is the right format of making journal entries. इधर मैंने आपको फॉर्मेट एग्जाम्पल के तौर पे शो किया है, एंड इधर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपने देख लिया है कि ऐसे बनेगा फॉर्मेट. लास्ट एंट्री, विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़. सबसे पहले इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे. अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं कोई भी एक्सपेंसेस या कुछ भी विड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए आता है ड्राइंग अकाउंट. और हमारे पास से क्या गया,
हमने बैंक से निकाला. What goes out from business? बैंक. तो ये तो पहले ही पता चल गया कि टू बैंक होगा, क्योंकि आउट क्या हुआ है? बैंक. एंड हमारा एक्सपेंसेस है बिजनेस का, कि हमने कुछ विड्रॉ कर दिया पर्सनल यूज़ के लिए. सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बीइंग withdraw from bank 5,000. These are simple journal entries, and if you learn these 3 rules, सो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जनरल एंट्रीज बनाने में. एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है जनरल एंट्री बनाने में, यू कैन कमेंट बिलो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. मैं आपको वही वीडियो बना के दूँगी जहाँ पे आपको जो पार्ट समझ नहीं आ रहा, ये अकाउंट नहीं समझ आ रहे, फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा, जो भी आपको दिक्कत है. एंड आई विल ऑल्सो पेन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू मस्ट ट्राई. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ आएगा. एंड एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, बोथ द अकाउंट विल डेबिट और क्रेडिट. द लास्ट थिंग इज सेम. आपको इनका कैलकुलेशन करना है. डेबिट साइड का टोटल इधर एंड क्रेडिट साइड का टोटल इधर. एंड इफ़ द टोटल आर इक्वल और सेम, सो योर अमाउंट्स आर करेक्ट. आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. Thank you very much, and stay tuned for more videos, and please comment below how's my video is.